Hi, Please, this this is will Ravi be our Kumar. last question. Hi, Thank you. this is Ravi Kumar from News Helpline. My question is to सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, आपने कहा कि ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एक आम नागरिक तो नॉर्मली ट्रैवल कर सकता है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग करना, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है हर जगह. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितना डिफिकल्ट होता है एक सेलिब्रिटी के लिए ट्रैवल करना, बिकॉज yesterday there was an incident when SRK was traveling by train, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था पूरा जर्नी. तो क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ चाहे सेलिब्रिटी हो या डिपेंड करता है कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप अपनी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं, आपकी पिक्चरें पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उतना खुल के आप एक्टिविटीज़ या चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. बिकॉज ट्रैवलिंग में जैसे अगर स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई लाइक टू ऑब्जर्व. बट अगर आप लोग आपको पहचानते हैं, यू बिकम ऑब्जर्व दी ऑब्जर्व्ड. सो यू कांट ऑब्जर्व एनी मोर. लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख पाएंगे, आप नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक अगर आप इसी कंट्री में, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. तभी मैं न्यूजीलैंड चले जाता हूँ, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम लोग हैं और आसान हो जाता है. और जहाँ तक कि जो इंसिडेंट की बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड जो हुआ है, जो बट आई थिंक यू नो आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ इट. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर निकलना बंद कर दें. इट वाज एन एक्टिविटी व्हिच they were promoting their film, and it's a very unfortunate thing that happened there, and that's it. It's just very, very sad to know, yeah, that somebody, this kind of accident has happened. So that. All right, so that Last do question. we Last have question. time for one more question? We Yeah. don't have time for one more question. So that one question, it's fine. We can manage one question. It'll take few seconds, I believe. So that the incident that happened, do you feel the precautionary measures were not taken? And as a fraternity, you feel that you should do such activities, when people go wild. Sorry, what has happened? What? The incident that has happened yesterday at Vadodara. Do you feel that the actors should just announce when they are doing such activities on Twitter, and because people came there and a lot of people got hurt and one person died as well. So do you feel that you should be doing such activities in future as well? Do I feel we should not be doing such activities? Sorry. Well, first of all, I didn't do it, so I don't know whether I should or I should not. So, सवाल मेरे ऊपर नहीं है. I think all of us are planning to promote our films, and it's a good intention to promote and get awareness about our movies. Marketing में हम लोग कब से करते आ रहे हैं. It's not the first time everybody is doing any marketing trip or going out and promoting their film. So I think it's a norm, but definitely what has happened is unfortunate, and nobody has planned for it. It's something that should not happen. I was not there to experience what has happened. I don't know कि क्या exactly हुआ है. I've also read it just जैसे आपने पढ़ा है. So I think, yeah, there's nothing more to say. It's definitely something which is very, very sad and should never happen. And the authorities or whoever it is, or as I said, I'll be wrong in commenting on it because I don't know exact details. But it's very unfortunate, and I'm sure nobody's intentionally done something wrong. It's an accident which can happen anywhere.